भैया भैया देखो तुम्हें एक तो लिंक भेजना हो, जरा वो इमेज डाउनलोड करके भेजना तो इसी मेरे नंबर पर। तो व्हाट्सएप का ओके, स्ट्रीम तो स्टार्ट है। अरे हाँ, अपन हेडफोन पहनना फिर में हेडफोन पहन लिया जाए पहले। तो मेरी आवाज़ आ रही है गाइज? तो चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है। गेम की तरफ हम लोग रुख करते हैं, जहाँ पे हमें सबसे पहले ओके, डेली कमीशंस कंप्लीट नहीं है, पहले डेली कमीशंस की तरफ बढ़ लिया जाए। यहाँ पर ए यार पूरा लॉमा के लिए मेरे को थोड़ा चेंजिंग करनी चाहिए, जैसे कि लॉमा में इशू आया है। कहाँ गई मेरी लॉमा? ये सेक्रीफिशियल तो ठीक है, इसका ईआर थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है मुझे। ईआर 134 है, 50 के पास। ये क्या है, क्रिट रेट का थमाया गया क्या लग रहा है? ओह या, चलो एक बढ़िया पीस मिल गया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, बस ये देखो, ये है। इसी तरफ ध्यान ना दो। ये इशू है रे, ये चलो कोई ना। चारों पे के गया।
एक डोर अपग्रेड करके देखे जाए क्या, क्या कहते हो? ये एचपी पे जाएगा, ये एचपी पे जाएगा, देख लेना। डिफेंस, सुपर डिफेंस में ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। क्रिट रेट, मैं जान रहा हूँ ये साला क्रिट रेट के मतलब वो किसी पे नहीं जा रहे हैं सब। फेदर में ही देख लो, फेदर में ये है, ये है। फेदर एक तो निकला था ना। ए यार लास्ट डिफेंस क्यों है, मेरे को लग ही रहा था ये बड़ा अपग्रेड ही नहीं करूँगा। तो चलो एक बार और, एक और ले लिया जाए। बस काम खत्म इसका। क्या यार, ये ठीक है। ईएम का एक ये पीस है, यहाँ भी ईएम का एक पीस होना चाहिए ना। ये क्या है, अटैक का है। There are still so many places for us to explore. इस बच्ची को भी कुछ दे ही देते हैं।
Things are about to get dicey. Gotcha. The Temple of Wisdom. By the frost moon of old, branch into song. Eeny, meeny, miny, mo. Ding, dong, water. Leave this place. I am being tested. Busted. Gotcha. You on this. Look, the rainbow. This way, turtle of them. Receive my blessing. Grow, grow, grow. Make yourselves a home. Here comes the catch. Busted. Quietly now. Go claw. For the everlasting forest. Luscious. Branch into song. Gotcha. Quietly now. The Temple of Wisdom. This way. Game's up. Fun's over. Lash attack. With one heart, we pray. I am being tested. The airband flow is over. ये दोबारा कैसे मर गई? चलो ट्राई करते हैं उसके बिना मर रही मर तो जाना चाहिए लेकिन इशू बहुत Committed to memory. Busted. Quietly now. Here comes the catch. Ding dong, water ball. Make yourselves a home. Grow, grow, grow. Gotcha. Busted. Look, the rainbow. This way, turtle. Game's up. Fun's over. Quietly now. Grow, grow, grow. Ja. Ja, ja. Ja. कुछ ढंग का नहीं मिल रहा है ये हाइड्रो डैमेज बोनस में अगर क्रेडिट की डैमेज रेट कुछ कम भी आता या ईएम ईआर ही दे दिए होते Sharing my knowledge. Committed to memory. Help! Busted. Lash attack! Here comes the catch. This way, turtle. Quietly now. Look, the rainbow! You're blind! Why isn't it work? The Temple of Wisdom. Things are about to get dicey. Busted. Go close enough, I'm cold. Committed to memory. Quietly now.
कुछ ढंग का नहीं बेचारा। इसकी भी कमी पड़ गई। Ad Astra. Thank you for completing. Ad Astra. Ad Astra. There'll be an extra fee for that. Take it easy. पहले कैरेक्टर से कर लिए जाए। It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. अरे हाँ, दूरिन के मटेरियल्स कलेक्ट करा दे। इसको भी जरा अपग्रेड कर देते।
more clues for us? We're all set for the next chapter. Yeah, I was just about to come find you. Let's see what it says. Now sprout to life the story's seeds, stirred by wind-born melodies. Then on that breeze the music leaves, fading into distant memories. Seek the place where wind and tale entwine, and once there, make 3 riddles into verse. And for in poetry and song will this story start to blossom. Come on! Another riddle? All that talk about wind and melodies? What do you think the answer could be? Wait a minute, melodies, monsters are you thinking what I am thinking? Oh! Care to elaborate? Wind, music, poetry. Tone-deaf bards gotta know the answer. You mean Lord Barbados? Albedo introduced us when I first arrived in Mondstadt. I mean, someone like me was bound to catch his eye sooner or later. It's better that it's out in the open anyway. Now, how should we track him down? आ गया खुद ब खुद आ जाता है I'm pretty sure he's already caught wind of what's going on here. Why don't we just see where the wind takes us? Right. He definitely makes it easy to forget he's a real god sometimes. हाँ okay Wendy Traveler, Paimon! What a sight for sore eyes! Ah, and the little dragon from the fairy tale world. I heard your voices calling out to me on the wind. Something about needing help with a riddle? Sorry to disturb you, Lord Barbados. Disturb me? Not at all! To tell you the truth, I'm just as curious about this riddle as you are. Let me take a look. What is it? Did you figure out the answer? 3 riddles and 3 melodies. That sure takes me back. The answer you seek lies hidden in memory. Looks like running to Tone-Deaf Bard was the right call after all. Long ago, those mages came to Mondstadt, seeking to test their strength against mine. But I replied, let us make music, not war, and resolve our conflicts through song. So I strummed my lyre and sang them this verse. Oh wind, welcome now, my guests. Pass through verdant leaves unseen, where shape your formless self may take, and offer up a graceful scene, a fleeting gift for welcome's sake. Leap at the edge of a sea of clouds, where land meets sky and sky meets ground. There frighten off the noisy crowds and bring my guests a calm profound. Fly beneath the stars up high, where mortal noise is swept aside, that my dear guests with starry eyes may share the dreams they hold inside. Now go to where I vowed to keep a quiet spot for them to sleep. No clash, no contest bars the way, just tea and mirth to fill the day. There you have it, the 3 melodies. As for the answers to those 3 riddles, I trust you can guess them by now. The woods, the edge of a cliff, and the sky? Correct! Funnily enough, your mother was also the first to solve it, all that time ago. There must be some kind of special rapport between those who write stories and those who sing them. The woods, a cliff, and the sky. Oh! So that's where it is! I suppose
the spot that answer points to is where you're headed next. You should know, after solving my riddle, the mages even accepted my proposal and made that location their official meeting spot. And going by what your book is suggesting, once you found it, you might want to try playing the melody I just shared with you. Guess you can be pretty reliable when it counts, huh? Great animal Archon? नहीं don't Thanks for the बार help, Lord Barbados. Still got questions for me, huh? Yeah. Hello. You must have read countless tales in your time, being a wandering bard and all. In your experience, why might an author consider a story unfinished? Unfinished? Well, I guess if there's something left to accomplish in the story, or, oh! If the last line goes, "To be continued." Huh? Wow, कुछ नहीं your मालूम helpfulness lasted for like 1 second. In all seriousness, I would think the answer to that question lies in your mother's story itself. It's not my place to pry any further. All right then. We should get going. Okay, we're here! Now, we just need to play the 3 melodies, and we should be able to gather the memories for the next chapter, right? A musical performance. Out of all the things Miss Lisa has taught me, that's the one I'm worst at. Leave it to me. And third. D H J Q W E W Q J Q किस लिए बुला रहा है Even a war that shook the world could not halt the witches' gatherings. Yet even so, with the passing of time, 3 of their teacups no longer came to be set. The witches did not linger long in sorrow, for the Story Witch had brought glad tidings of her own. Born was her dragon child, safe and sound. Her fellow witches offered up their blessings, eagerly debating how to celebrate the child's birth. In the end, they settled on the most vibrant balloons they could find. After all, what could be more joyous than the arrival of new life? And so, the witches' gathering turned into a birthday celebration. So, we're back in the story world, huh? As if from nowhere, new guests appeared at the witches' table. Perhaps they too had come to celebrate the dragon child's ये राइन birthday. डॉटर है ना हाँ
Yet while everyone Yeah, else man, was yeah, busy Alice thinking है about और what kind of gift to इसका offer, क्या था यार these नाम मैं three भूल गया seemed to have come empty-handed. Hardly the recipe for a warm welcome to a birthday party now, is it? A gift? Hey, what's this all about? We only just found out this was a party. While the guests voiced their complaints and grievances, perhaps they should have been wondering what kind of gift to give instead. सही बात है So, we need to bring a gift to advance the story? Ah, but where are we supposed to get something like that? Perhaps it would be a good idea to have a look around. Why didn't you just say so? Hey, could we use these as gifts, maybe? At last, the guests found something to give the dragon child. Guess that's a yes then. Which one should we go for? Still, the guests wondered what kind of gift might the little dragon really want. Should they put a warrior's sword in his hand and send him out on an unstoppable अरे हाँ quest निकोल to है save the भूल गया था world? मैं उसके बारे में Or perhaps a wandering hero's slingshot and the promise of a life of endless, uncharted adventure. Or maybe even a scholar's tome and the chance to take on all the world's unsolved mysteries. Okay. Wow. That's a lot of pressure all of a sudden. Oh yeah. Technically, we're actually picking a gift for you. So, which one would you prefer? You want me to choose? Wow. How come? For as long as I can remember, I've spent most of my time living in the stories my mother created. I always thought my mother had everything written out for me already. Just like the toy निकोल figures एलिस in एंड Constellation एम और Metropole. आर What I wanted to do with my own हाँ तीन ठो का future. नाम तो मालूम Huh. है एक का नाम क्या कहते हैं something I've निकोल never है एक really का नाम thought एलिस about. और एक का नाम रायन डॉटर है Did I चौथे का want नाम back एम then? का क्या नाम था दिमाग से उतर गया मेरा This is the first time I've ever asked myself that question. Sounds like this is the perfect opportunity to answer it then. It's been a while since you left Simulanka, and after everything that's happened, it might be about time to start thinking about your future. Then let me give it some thought. दाढ़ी बढ़ गया यार दाढ़ी कटवाने लगा है ना Observe the sword इसको सही करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा In the end, the guests settled on the scholar's tome. So you're the scholarly type. I just feel like I should learn more about the way the world works. What makes you say that? I'll give you an example. Did you I'm know that in guessing- Mondstadt, using fire to catch fish is a punishable offense? I am guessing Cleto pure fish blasting I thought she was just teaching me regular hunting techniques. It was only after Master Jean caught me and sent me to solitary confinement that I realized I'd misread the situation. So much of what's considered common knowledge in your world just wasn't in Simulanka. So I have to learn, or I'll keep causing trouble for everyone else. Paimon's not
sure that counts as common knowledge. अरे यार राक्षस जैसा लग रहा है मेरा Each day is a new page in my story. I want to savor every scene, every footnote, before I turn to the next one. Alright. They should let us in now that we've got a gift, right? Hello there. Brought a gift this time? The newly arrived guest presented his gift, wishing the little dragon a future as a wise and accomplished scholar. Accepting the guest's blessing, the Story Witch invited him and his friends to take their place around the table. Finally, she could introduce them all to her dragon child, telling all in attendance about the moment of it was then that the Seer Witch, diviner of the stars, withdrew her gaze from the heavens and turned a sorrowful glance upon the little dragon. You gave him the same name as that evil dragon? That's right. But the life I intend for him shall be very different. What folly, to love so blindly. For as you must know, a name is the mirror of destiny itself. He who bears his fate has been foretold. Then I'll rewrite it. The witches at the table fell silent, for they knew the Seer Witch's words had never once proven wrong. Yet, just as clearly, they recognized the Story Witch's resolve. एक बार बताओ For there is मेरे scarce a force in this world more fearsome डोरिन than को a mother's लेवल love. अप कर लेना हाँ कर लेंगे भाई At वो last, एक बार the बताओ merry मेरे ख्याल witch से क्या stepped कहते हैं forward, एम और क्या dispelling the कहते हैं uneasy अपनी जो silence. वो है एक मिनट हाँ एम और जो अपनी वो है क्या कहते हैं जो डिवाइनर है विच दोनों एक ही है ना इस हिसाब से तो क्या कहते हैं यहाँ पे ये डिवाइनर विच और स्टोरी टेलिंग विच दोनों अलग अलग बताए उसे क्या मतलब है उसका और फिर उसके बाद भी क्या कहते हैं यहाँ पे बताया गया है कि क्या कहते हैं इसके दोनों बंदे अलग हैं क्योंकि ये टाइम वो जो डिवाइनर विच है वो बोल रही है कि ये कहते हैं तुमने उसको वही नाम दिया है कुछ लोचा समझ में नहीं आया क्या है चलो आगे की स्टोरी देखते हैं So be it. Then we'll all lend a hand. Together, we shall rewrite this child's fate. You mean to defy one of the fundamental rules of this world? I refuse to be shackled by such rules. Besides, this is a witches' gathering, is it not? What could be more fitting a subject for this occasion than to defy them? Oh? Sounds like an interesting experiment. I suppose, were we to succeed in this endeavor, we might bring a touch of wonder to this otherwise dreary sky of stars. The merry witch finally talked them all round, just like she had done many times before. Warm and strong as the sun she was, so much so, in fact, that those who her light shined down upon had no choice but to bask in it. And so the witches readied their gifts, 3 marvels of the cosmos. For this child, I shall decipher the ravings of the heavens and lay bare before him the trickery of fate. For this child, I shall leave a formula powerful enough to unravel the very origins of this world, that he may seek another solution for the conundrum of his life. For this child, I shall call upon wondrous magic to make possible his impossible wish. All the Story Witch had was the pen in her hand, yet with the love that flowed from it, she resolved to bring forth a marvel of her own.
For this child, I shall leave behind the last story I will ever write, and with it, a path to an ending yet untold. With the witch's blessings given and received, the little dragon's fate at last began to turn. In the midst of the dragon child's birthday celebration, the seer witch proclaimed her prophecy. The child had been given the evil dragon's name, and with it, the burden of its fate. But hearing this, the story witch vowed to rewrite it all, for such was her love and resolve. And so the other witches offered their gifts in turn, marvels as rare as any in the cosmos. Together, they sought to test one of the fundamental laws of this world, in part to support a mother's love, पता नहीं and भाई in मुझे part अरे to यार वो sate ठीक है their मैं वो own सोच रहा था बस कि curiosity. कैसे हो सकता है अगर Oh, and I almost forgot. Our new guests came bearing blessings of their own. Who knows? Perhaps this extra dash of wisdom might be all the little dragon needs to change his fate. चलो अब आगे बढ़ते हैं Witches read their gift and radiate their gifts, three marvels of the cosmos. वापस आ गए फिर से ब्रेक लगेगा मैं जान रहा हूँ Looks like we've completed this chapter too. Those witches in the story were the mages at the Hexen Circle, right? They sure seem to care a lot about you, Durin. But, Paimon kinda had trouble following their conversation. Just a bunch of mystery, as usual. The evil dragon's fate. Oh, is that what you're worried about? But didn't we already take care of that? Yeah, after what happened in Similanka with everyone's blessing. Ah, the mages must have had a hand in that, too. Also, I was just thinking, which part of the story are we even meant to be completing? Oh, That's a good question. it feels less like we're filling in the gaps, and हाँ more like we're adding something new altogether. But we use the ink, right? And the book hasn't given us any more clues, so that must mean our task is complete. At least for now. Yeah, I guess we're doing something right. Even if we run into trouble, we can always ask Alice. Maybe I'm overthinking things. It's just, this is my mother's final wish, so I don't want to mess it up. Anyway, thanks for all your help. I'll let you know as soon as the book reveals a hint about the next chapter. Okay then. See you in the next chapter. भैया ये क्या कहते हैं जो तुम्हारी एम है वही है ना क्या कहते हैं उसकी वो क्या कहते हैं अरे जो तुम्हारी वो है यार अच्छा एम और ग्रैंड अलग है मुझे मालूम नहीं डिवाइनर ही एम थी ना जो क्या कहते हैं प्रेडिक्ट करती है नहीं वो मोना की मास्टर है वो कोई और है एम मोना की मास्टर है नहीं मोना की मास्टर कोई और डिवाइनर है हाँ तो वो कौन है मतलब कि उसको भी तो एम के रूप में दिखाया रहता है सब याद करो कि कहते हैं कोलंबिना का जो स्टोरी हम लोग खेले हैं लास्ट वाला स्टोरी उसमें डिवाइनर को बुलाए रहते हैं ना सब तो उसको एम के रूप में ही नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं मैंने शायद उसका लाइव स्ट्रीम किया था चेक करो तो मुझे जानने की यार यही था कि कहते हैं उसको एम के रूप में इंट्रोड्यूस किए थे सब और फिर उसके बाद क्या कहते हैं और अभी दिखा रहे हैं कि डिवाइनर विच और एम दोनों अलग अलग क्योंकि एम का दिखा रहे हैं कि एम तो रैन डॉटर मुझे लगती है रैन डॉटर को भी अलग दिखाया इसमें सब इसमें निकोल को नहीं दिखाया सब एम और रैन डॉटर मतलब फ्यूज हो गए क्या फ्यूज हो गए देखो
यहाँ पे है ना, इसको मैं ओपन किया, स्टेप बैक इन स्टोरी देखा जाए। देखो इसमें ये 4 ठोके कहते हैं हैं ये अलग है, अलग है। देखो ये रॉ एंड डॉटर है। हाँ ये तुम्हारी क्या कहते हैं, डिवाइनर हो गई मान के चलो एक तरीके से। हाँ इसको डिवाइनर रखो या इसको डिवाइनर रखो। मेरी विच तो ये है क्या कहते हैं, तुम्हारी एलिस है, ये क्या कहते हैं डिवाइनर विच ये होगी। हाँ इसका नाम बी है, तो डिवाइनर का नाम बी है। और क्या कहते हैं तो निकोल क्या है? निकोल कहते हैं एंजल। वो विच में नहीं आती है। कौन कौन है यहाँ पे देखो एलिस है, वो तुम्हारी एम हो गई, नहीं एम वो है। और रैंड और एम मुझे एक ही लगते थे, मुझे लगा अलग है रैंड और एम। हाँ ये देखो रैंड डॉटर ये है ना, ये रैंड डॉटर है। ये तुम्हारी वो हो गई डिवाइनर हो, स्टोरी टेलर है ये एम है। और क्या कहते हैं ये तुम्हारी डिवाइनर है ना। मुझे रैंड और एम एक ही लगते थे, मुझे दो अलग है। मुझे लगा जो अल्बिडो की माई और रैंड डॉटर ही है ना। As of late, the tricksy witch has nearly the entirety of the snowy lands in her grasp. Now none but the Tsar can command her submission. Such a pity that she can no longer spare the time to join our gathering. Tell me, does the Wander Witch still roam among the stars? Who can say how long we'll have to wait for her return? I had hoped चार sharing all कितने the witches fun हैं little total? stories from our gatherings 6 witches हैं might ना? entice her to remain. Then how about the memory witch? Does she still walk the Memory mortal witch? realm? Yes, she has that secret mission of hers to accomplish, so she couldn't make it to our gathering. But she मोना doesn't की seem to मास्टर regret है her ना choice, वो तो so naturally, it's not my ये place वाली to ना? pry. As rare हाँ a chance to gather ये स्टोरी as विच this, है, ये एम है। and yet almost half of us are absent. Cheer up. At 1 least 2 you came with 3 good 4 tidings. 5 6 7 I टोटल suppose 7 I'm just feeling a वो little हैं। sentimental. After all, there will come a day when I too am among those absent at these. चलो बढ़िया रिडीम कर देते हैं दिमाग वाले आदमी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बस कर तो लिया फिर से। क्या करोगे यार अबे 7 घंटे का कम टाइम लगा है इसको, 7 घंटे में आ जाएगा फिर से। अगर मैं सुबह में किया होता तो हो गया होता अब तक। टोटल कितने इसके पार्ट्स हैं चेक कर लेते हैं। ड्रैगो प्यूबल क्वेस्ट 3 दिन बाकी है। क्या लिखा है ये? तुम उसको तो मरवा हाँ, दिए जो होते हैं। you need 5 calendar days for your quest experiencing you please plan your time accordingly। लिटिल ब्रो बोल रहा था मैंने इसको नारुलू है, नारुलू हाँ तुम्हारे चक्कर में मर गया। जो दिन को अपग्रेड कर लेते हैं। मैंने लॉन्च किया गेम एक वर्जन में कंप्लीट भी बीतने की नहीं है तो माना चलो भाई। ओ एक्जन सर्कल वाला गो टू होमवर्क। स्पोर्ट्स गेम डाउन नहीं हाँ इसका एक्सेप्ट करते हैं। स्पोर्ट्स में खेलना कोई पसंद नहीं, खेलना क्या पसंद है। असली में खेलना फुटबॉल में चलो कभी मिलेंगे खेलेंगे ग्राउंड पे। हाँ लेकिन तुम अभी दे दे कहाँ है, तुम गाजियाबाद में रह रहे हो, मैं नोएडा में रह रहा हूँ। तो इसी को करते हैं। क्या कहाँ पे देखो कहाँ बात हूँ पिंटू भाई ने उसको कहीं और लग गया क्या? मैं पिंटू ऐसा आदमी कहीं और लगी मैंने छोड़ नहीं क्या काम क्या कौन करो भाई
एक्शन सर्कल का क्या कहते हैं वो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, ताकि तुम्हें ये एक्स्ट्रा टैलेंट मिल सके। Hey, Durin! So this is where you've been. Oh, Traveler, Paimon. What are you doing here? The real question is, what are you doing cooped up in here reading a book? The weather's nice out there, you know. Oh, well, ever since I've had more chances to interact with the people of Mondstadt, I've been having trouble telling when people are joking. For example, I saw a beautiful flower the last time I was at the florist, so I told the shopkeeper, and she said, "Ah, if you like these weeds so much, you should add some mint and sweet flowers and make it a bouquet." So I did as she said, and when I showed her the finished bouquet, she gave me a frankly terrifying look. You have unique perspective during like see the one with the issue here. Say what? Later, Albedo opined that this happened because I have trouble understanding the meaning behind words. So after I learned the Mondstadt script, he told me I could come here and read. I was born from a storybook, so I felt that these books might be able to teach me more about the rules of this world. And, well, I guess I lost track of time. So, did you guys need something? Friends do often drop by just say hi, Dory. So we are here at the Hagen Sinker behest. Yes. Yeah, we have a message to pass along from Rhine-daughter. Oh, it's from Aunt Rhine-daughter? Rhine-daughter के उससे है? ये कैसे? No, I'm just surprised. Rhine-daughter is my mom's friend, and the mother of the dragon that once existed in my stead. I supplanted him, took the fate that should have been his. So if she dislikes me, well, I'm not sure what I'd do. Yeah, we're here for you. But seriously, Paimon doesn't think it's anything bad. That does make me feel better. Well, I guess I should open it. DMC भी कर रहा हूँ 1 2 3 Where are we? Did this stupid dictionary transport us to some weird place again? My mom's scent. I sense it here. Whoa! Here comes a strange cat. ये कौन है? मैं सोच रहा हूँ इंटरनेट पे हम लोग इतना निर्भर हो गए ना, हमें तो इंटरनेट नहीं रहा, तो ऐसा क्यों इसलिए मैंने तो PS5 खरीद लो और सीरीज खरीद लो। Well, this is familiar. I have a message to deliver on Master Rhine-daughter's behalf. Ahem. This is the first time we're meeting, so I'm not sure how to address you. But since you're Hem's child, I suppose I'll stick with Mini Durin. Though you appear smaller than the Durin that came before you, that same strength flows through your veins, not a drop less. He was a child of Humus, an incomplete creation. Thus he lacked the will to control his own strength. Yet this power was beyond what he could withstand, and so it twisted him, consumed him, thus sealing his ultimate fate. Albedo claims that you have transcended this tainted blood, becoming a being much like himself. That is his opinion. I remain unconvinced. I trust only the facts, only that which I see for myself. So take this chance, child of M. Prove yourself to me. Where did all these monsters come from? Is this the proof you need, Aunt Rhine-daughter? Very well. I'll show you what I can do. Doris, protect us.
This might hurt a little. Sure. The power within me is surging to the surface. This is getting easier. You're blind. Looks like Albedo wasn't mistaken after all. Next time, maybe don't ambush us with a bunch of monsters just to prove a point. Still, I do feel like I can control my power more freely now that we've defeated them. After hearing about you, I prepared a technique that would seal the dark power in your blood. I had planned to take this opportunity to pass it on to you. Of course, using it comes with a price. While it would maintain your existence in Tevat, it would also weaken your connection to this world. And you are M's child, when all is said and done. How could I allow that uncontrolled power to send you down the same path as the child who came before you? But seeing you now, it appears my concerns were misplaced. M was a terrific mother, and a far more capable one than I. And I must admit, I'm rather curious to see how far you can go. How will you, an alchemical being truly integrated with this world, find your place in human society? I've never conducted an experiment like this before. As such, you may yet hold the key to some unexpected answers. Hey, you got one thing wrong there. Doran's not an experiment. He's our friend. I'm not sure I understand, but I appreciate your kindness, Aunt Rhine-daughter. And that's all Master Rhine-daughter has to say. Could we get a self-introduction at least? Yeah, we're used to talking cats at this point, but one that can imitate someone else's voice? That's a first. I don't see how that's important, but if you must know, I am Sebas, a simple butler. You're friends of Albedo, yes? Strictly speaking, I am his elder. So make no mistake, I am no ordinary cat. In fact, from a biological standpoint, I am no cat at all, but rather an alchemical being. You wouldn't consider yourself a specter simply because you float in the air like one, surely. A specter? What are you trying to say, mister? Oh, I know. Sabaz is implying that you are... Maybe don't finish that thought, Dory. Thought. Hey! Oh, and considering how Master Rhine-daughter's message ended, I suppose this technique is useless now. I'll just destroy it. Few and far between are the people that can make her reconsider. Quite the impressive feat, young man. With that done, I'll be going now. I have another message to pass along. Perhaps we'll meet again sometime. टैलेंट अनलॉक हो गया चलो अब मिनी डोरिन मिनी नहीं रह गया है बड़ा हो गया है ये रहा विच राइट ओड ऑफ एसेंशन इसमें क्या होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग विच होमवर्क ऑफ द रेस डोरिन विल become a Hagian Circle character. When the party includes at least 2 Hagian Circles characters, you will gain the Hagian secret right effect, which enhance Haggeria character. Secret right क्या करता है कि increase all the effect of the ascension talent, light manifest of the divine calculus, except for the duration. Light manifest ये एक्सेप्ट फॉर ड्यूरेशन बाई 75%, यानी कि ये इंक्रीज हो जाएगा। इसमें तुम्हारा जो ये है कि कहते हैं अगर 2 कैरेक्टर यूज करोगे तो ये तुम्हारे 75% से इन दोनों का परसेंटेज इंक्रीज कर देगा। इसका 20% है ना, तो बी रिमेंबर कि कहते हैं वो 20% का 75% है, समझे? तो 20% का 75% यानी कि 15% इसमें इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा। ये टोटल 35% का आ जाएगा तुम्हारा। एलिमेंट इन्वॉल्व इन द क्रिएशन आर डिक्रीज बाय 20%, समझे? और जो ये वाला है इसमें 40% का
40% का क्या कहते हैं 75%, यानी कि 30% और बढ़ जाएगा, 70% के आसपास का ये तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं डोरिन के साथ कोई एक और हैगजन सर्कल कैरेक्टर रखता हूँ, अगर हैगजन सर्कल तुम्हें कैरेक्टर चाहिए उसके लिए तुम क्या कहते हैं डायरेक्टली यहाँ से जाओगे, सुक्रोस हुई, सुक्रोस पे जाओ डायरेक्टली, इसका जो ये हैगजन सर्कल वाला है विच क्राफ्ट वाला, इसको कंप्लीट कर लोगे, इसका जो गो होमवर्क है इसको गो होमवर्क जाके इसके कंप्लीट एक्सेप्ट कर क्वेस्ट करके इसको कंप्लीट कर लोगे तो आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। या फिसेल का भी कंप्लीट कर सकते हो, फिसेल का भी ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या करेगा ना कि क्या कहते देखो देखो इसमें क्या करेगा कि क्या कहते हैं आफ्टर सुक्रोस क्रिएट ए स्मॉल स्पिरिट नियर बाई पार्टी मेंबर, नॉर्मल अटैक एंड चार्ज अटैक, प्लंजिंग अटैक, एलिमेंटल स्किल, एलिमेंटल डैमेज बर्स्ट इंक्रीज बाई 5.714, ये तुम्हारा परसेंटेज इसके द्वारा बर्स्ट का डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी चीज़ है, नॉर्मल अटैक हो, चार्ज अटैक हो, प्लंज अटैक हो, एलिमेंटल स्किल या बर्स्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसका डैमेज इंक्रीज हो जाएगा 5% से। और आफ्टर सुक्रोज क्रिएट अ लार्ज विंड स्पिरिट नियर बाई हैगजन सर्कल पार्टी मेंबर और नॉर्मल अटैक, जो तुम्हारा क्या कहते हैं हैगजन सर्कल वाला कैरेक्टर रहेगा उसका क्या कहते हैं पार्टी में उसका तुम्हारा कनेक्ट होगा, यानी कि तुम्हारा जो जिसके ऊपर ये वाला एक्टिवेट रहेगा, ये चीज़ याद रखना, विच यू राइट, ये कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा। अगर वो कंप्लीट रहेगा तो तुम्हारा उसके क्या कहते हैं 7% से इंक्रीज होगा। 7% और 5% तुमको कम लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा खासा ये बफ मिलता है। दूसरी तरफ हमारी फिसेल है, फिसेल का भी देख सकते हो, इसका फैंटम नॉक्चुरिन, इसमें क्या करता है ना कि तुम्हारे क्या कहते हैं नॉर्मली ऑन द फील्ड पार्टी मेंबर्स गेन एडिशनल बफ्स। अब उसमें क्या क्या बफ गेन करेंगे देखो, after nearby party member triggers an overload reaction, Fizzle and others nearby active party members have their attack increased by 22.5%, यानी कि कहते हैं अगर ओवरलोड भी रिमेंबर कि अगर ये तुम क्या कहते हैं उसको पायरो कैरेक्टर के संग यूज करो तब ये काम आएगा। और ये लूनर चार्ज का है, नीचे वाला लूनर चार्ज के लिए ये तुम्हारे क्या कहते हैं डोरिन के संग काम आएगा, ऊपर वाला इफेक्ट ये डोरिन के संग काम नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रो चार्ज वाला क्या कहते हैं या तो फिर तुम उसके संग यूज करो किसी इलेक्ट्रो कैरेक्टर के संग, या तो फिर क्या कहते हैं तुम अगर इसको इनेफा और उसके संग यूज करते हो, क्या नाम है तुम्हारा फ्लिंस के साथ यूज करते हो तब बेटर यूज कर पाओगे इसको। उसमें भी रिएक्शन है क्या कहते हैं फिसेल एंड अदर्स नियर बाई एक्टिव पार्टी मेंबर्स हैव एलिमेंटल मास्टरी बाई 90%। 90% उन लोग का एलिमेंटल मास्टरी बढ़ेगा और कुछ नहीं, तो ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है मेनली। तीसरा अपने पास रेजर है ना, रेजर का डैमेज काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज किया है इन लोगों ने, देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, कहाँ गया रेजर मेरा, हाँ इलेक्ट्रो रेजर, ये रहा पपी रेजर। Additionally, Razor Elemental Burst Lightning Fang is enhanced. The wolf within damage dealt increased by 70% of Razor attack. इसको अब जितना अटैक करोगे उतना ज़्यादा क्या कहते हैं डैमेज बिल्ड करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको क्या कहते हैं डायरेक्टली उससे बिल्ड करो, क्या कहते हैं उसे, हाँ फिजिकल डैमेज पे इसको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है पूरा। और क्या कहते हैं तुम्हारा ये वाइल्ड वुल्फ विद इन द समन रेजर एलिमेंटल बस्ट लाइटनिंग फैन एक्टिव द इलेक्ट्रिक सिजल फ्रॉम द रेजर एलिमेंटल स्किल क्रॉय थंडर फ्लो द वुल्फ विद इन कॉल्ड द लाइटनिंग स्ट्राइक नियर बाई पार्टी में नियर बाई एनिमीज डीलिंग एवरेज डैमेज ऑफ इलेक्ट्रो डैमेज बोनस एंड 130। ये तुम्हारा 150% अगर ई यूज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा। और रिस्टोरिंग 7 एनर्जी, 7 एनर्जी भी रिस्टोर करेगा। दिस इफेक्ट कैन बी ट्रिगर वंस एवरी 1 सेकेंड, और हर 1 सेकेंड पे एक बार ट्रिगर करेगा। रेजर को बिल्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग के यूनिट में क्या कहते हैं नहीं है तो रेजर को बिल्ड करो, और साथ में क्या कहते हैं तुम सुक्रोस ले लो, सबसे बेटर साथ में तुम सुक्रोस ले लो। या तो फिर क्या कहते हैं इसके संग सुक्रोस नहीं रखना चाहते हो तो तुम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं पायरो में क्या कहते हैं सॉन्गलिंग और बैनेट रख लो, और फिर उसके साथ क्या कहते हैं वो फिसेल रख लो, बस उसका क्या कहते हैं वो विच वाला कंप्लीट कर देना। ये जो विच वाला है विच ईव राइट्स, ये कंप्लीट करके रखो फिसेल और उसका रेजर का मस्त आराम से, फिर उसके बाद तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा दोनों शुरुआत का, और काफ़ी अच्छा खासा डैमेज कनेक्ट करेगा। इसको मैं बिल्ड करूँगा दिखाऊंगा तुम लोग को कैसे कनेक्ट करता है, और ज़्यादा इशू भी नहीं आएगा। तुम क्या कहते हैं मेनली किस पे थंडरिंग फ्यूरी पे बिल्ड कर सकते हो आराम से। थंडरिंग फ्यूरी पे बहुत अच्छा खासा डैमेज देगा तुम्हारा रेजर।
रेजर और क्या कहते हैं फिसल, दोनों को थंडरिंग फ्यूरी पे तुम आराम से बिल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और साथ में क्या कहते हैं तुम थोमा को छोड़ दो, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर तुम क्या कहते हैं सपोर्ट यूज करना चाहते हो तो कहाँ गई सांगलिंग, हाँ ये रही, इसको यूज करना। अब इसको मैं ये कब दे दिया यार, हाँ इसको यूज करो, कैच का वेपन थमा दो बहुत आसानी से, बढ़िया अच्छा खासा काम करेगी। हाँ ई आर भर के देना ऐसे, जैसे ई आर इसका अच्छा खासा है वैसे ई आर भर के देना। और दूसरे पे तुम्हारे पास अगर वो हो जो बफ करती है ओवरलोड को, अपनी सेवरस, सेवरस कहाँ गई, ये रही सेवरस हो तो इसको रख सकते हो, नहीं तो फिर बैनेट अपना जिंदाबाद है ही। Oh, ow! Where did that come from? गाइस करो, पेनी इज एडवर्सिटी रेडी। मेरे को बिल्ड करना रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कहते हैं डोरिन को मेनली मैं सोच रहा हूँ कि ओवरलोड के रिएक्शन के लिए बिल्ड करूँ क्या। डोरिन मेरा है कहाँ गया, डोरिन है ये, डबल ई स्पैम करने से होता है, डबल ई स्पैम करो और बर्स्ट मार दो, ये नॉर्मल अटैक वाला है। चलो फिलहाल क्या कहते हैं डोरिन के लिए मटेरियल इकट्ठा करना है, डोरिन डोरिन डोरिन, अरे यार आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है ना, तो आज नहीं अवेलेबल है, चलो कल करा जाएगा इसके लिए, इसका टैलेंट मटेरियल Help me! इसको इसको बिल्ड करूँगा मैं, एक क्यूट है। इसको असेंशन लेवल इंक्रीज करना है, अभी मैं क्या कहते हैं मेनली कोलम्बिना के लिए ट्राई करने वाला हूँ, वरना इसको भी मैं बिल्ड करके हटा देता, इसको नहीं लगता। चलो असेंड तो कर देते हैं, असेंशन मटेरियल रखा ही हूँ। यहाँ क्या हो गया, अरे यार ये वर्ल्ड क्वेस्ट, जो चीज़ एक्टिवेट ना करना चाहो वही एक्टिवेट हो जाता है। नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना तुम्हारा स्टोरी टेलिंग,
चैप्टर का भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेस्ट करना This जरूरी isn't है। good. If the rain washes away ये the होता रहेगा traces, ना। it's gonna set us back a long way. ये खाली बैठे रहना, तुम ही कर लेना। Take it easy. Hup. Take it easy. He said one day you gonna fly away to live a love. नहीं ऐसे था। He said one day you gonna live a life. Take it easy. My father told me when I was just a child, live a life as we were. My father told me. Take it easy. Take it easy. And it pays to be careful. This isn't the kind of place you can just go for a wander. ये मस्त था गुरु। डोरिन के लिए फटोई को ही मार लो भाई। मटेरियल भी इकट्ठा कर लेने दो। अभी डोरिन का भी ये वाला मटेरियल इकट्ठा करना है। Take it easy. फटोई को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, वरना क्या कहते हैं फटोई को मारना तो कोई मारना मुश्किल काम नहीं है। भैया तो मम्मी बुला रही क्या?
इसके अंदर रहता है ना, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। Take it easy. ए बम। तुम्हारा भाई सब जानता है यार कि कैसे फोड़ना है। असल में ये गेंशिन वाले के ये सब ट्रिक्स पुराने हो गए हैं, इसलिए बहुत आसानी से मालूम रहता है कि कैसे इकट्ठा करना है ये सब। एटलीस्ट उसको 70 लेवल तक करने तक मेरे को चाहिए नहीं यार। Take it easy. मैंने तो सोचा था कि कचीना चांद को भी बिल्ड करूंगा, लेकिन कचीना चांद को बिल्ड करने का मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। चलो कुछ नहीं, अब आइनो को बिल्ड कर लेते हैं। खत्म। इनो 65 तो हो ही गया, 60 कर हो जाएगा, फिर 70 के लिए असेंड करने के लिए होगा ही मेरे पास मटेरियल। बहुत आराम से हो जाएगा, बस ये भी इकट्ठा कर लूंगा, हो जाएगा काम ना। होम होम जा रहा मैं। ओके जा भाई, मस्त पहुंच के एकदम। फोन करिए। क्या हुआ? हाँ नहीं बुला रही थी। चलो फिर लगे हाथ डोरिन के लिए भी मटेरियल फार्म ही कर लेते हैं। कहाँ गया डोरिन मेरा? यार टैलेंट नहीं है, सेंसर मटेरियल चाहिए मेरे को। अरे यार बड़ा दूर दूर पड़ रहा है। Lush as the moonlight. लामा के लिए मैं वो नहीं लगाया हूँ क्या यार, विंड ग्लाइडर। ओके इसके ऊपर कौन सा सूट कर रहा है ये नॉट क्राई वाला है, इसको निकालूंगा मैं। ये कोलंबिया पे ज़्यादा सूट करेगा। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर मेरे को लग रहा है कि ये सूट करेगा। और ये कौन सा है? ये तो बेकार है। I see everything. ऐसे ही टाइम पे तो नाहिदा काम आती है। Hey,
everything! Everyone hold hands! I see everything! Everyone hold hands! Complete. Okay, wait a minute. क्या इसको भी क्लिक करती है क्या? ओके, सारे मटेरियल कनेक्ट करती है। समझेगा, इसीलिए नाहिदा मास्ट बोल रहा है। I see everything! चलो यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ चलना पड़ेगा। Everyone hold hands! I see everything! Everyone hold hands! यहाँ तक मैं गया नहीं हूँ क्या? यहाँ पे कोई वो होगा जरूर। Oh, gloomy skies overhead. Oh, just like the last time we were here. The air's oh, we didn't get a good look then. All Paimon remembers is that really tall tower. So, let's explore the area more fully this time. Wait, is that... Ah, good day, you two. Assuming I don't have the time wrong. Honestly, I don't know what time it is, right? It is always dark in the final night cemetery. So I... Phew! Well, it's good to see a familiar face. Especially in this darkness. Oof! It really gives you the heebie-jeebies! You needn't worry. This is my humble abode, and the tomb of the Lightkeepers.
and while somewhat dark, it is on the whole a safe place. That being said, I rarely receive visitors here, save for the occasional colleague. What brings you two here? Well, to be honest, we just wanted to see where you live. We were in such a rush last time, we didn't get to do a proper tour. I see. In that case, as guardian of the tombs here in the Final Night Cemetery, allow me to extend the warmest of welcomes to you both, on behalf of the spirits who slumber here eternally. Wait, do you mean there really are ghosts here? That is correct. As you may have noticed, this island is dotted with headstones. You might think of it as a veritable necropolis filled with souls. Isn't it a welcoming thought? Ntar marah. If anything, this place just gets scarier. Ah, apologies. It was meant merely as a gesture of the hospitality that you deserve as guests. We don't receive many visitors here, after all. But I suppose it is a tall order to expect people to suppress their fear of ghosts. Even so, I do hope your visit shall be a pleasant one. The spirits on this isle, while somewhat old-fashioned and hardly gregarious, are an unassuming crowd who keep to themselves. I have found they make perfectly decent neighbors. If you still have misgivings, I can only suggest that you avoid staying outside where possible. The ghosts do not tend to set foot indoors very often, although that might render your sightseeing experience a little less riveting. Let me think. Most of the camps on this isle have been removed, and only the lighthouse remains, symbolizing the many battles the Lightkeepers have fought against the Wild Hunt. In that regard, it has quite a bit of historical value, and is thus well worth seeing. Yeah, that was the first thing we saw when we arrived. So, it's a lighthouse, huh? What happened to the light? Years of disrepair and a shortage of fuel, I'm afraid. As this island became abandoned, maintaining the lighthouse became increasingly difficult. Besides, even if we were to rally sufficient manpower to repair it, it would serve little purpose these days. In the past, it guided people on their way to and from the island. But all those people now lie beneath our feet in eternal rest. Well, that is perhaps not entirely accurate. They do sometimes come running out, speaking once familiar utterances into the void. In which case, since you are not used to the darkness that shrouds this island, you could consider restoring the lighthouse to illuminate your way. मतलब कि वो भी हम I लोग को too ठीक करना know पड़ेगा. well the comfort that a distant ray of light can bring on those lone journeys through the cold night. Alas, if only I could. I would enjoy nothing more than the pleasure of your company. Today, however, is when the post from headquarters arrives. I already have many reports to write, and with a new round of correspondence incoming, I fear I can afford to delay responding to the previous batch no longer. So please excuse me while I complete some of my paperwork. I shall accompany you as soon as I am able. As such, you should have no issues using it, so long as it helps you. I believe there should still be some backup fuel for the lighthouse stored in an old tent to the north. That should be enough to serve your present needs. And if you should need to find me, I will be in an underground basement on the north side. That's where I will be sorting through my reports. I will meet up with you once I have completed my urgent tasks. I see everything. Huh. There really are a ton of headstones here on this isle. And they're all so old you can't make out the words on them at all. Everyone hold hands.
everything. Hey! This place is super dark. Feels kind of stuffy too. Oh, and there are ghosts over there. But we'll be fine, right? I see everything. Hey! खत्म हो गया। अब कहीं नहीं ना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मिनी डोरीन ये रहा। टैलेंट टूर्नामेंट छोड़ो, ये भी छोड़ो। असेंशन के हिसाब से 83 ठो आ चुका है। एक बार और इकट्ठा करूँगा तो पूरा हो जाएगा। 40 ये है, 60 लास्ट में चाहिए, यानी कि ये टोटल मिला जुला के 105 चाहिए होता है। 83 है, 105 में से 83 घटा दो, 22 ठो बचा है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं रखते हैं हम लोग। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, और कल इसका ये नया जब पार्ट 3 आएगा तब फिर से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तब तक के लिए टिल एंड टाटा, गुड बाय गाइज।